अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज लेक्चर 3 क्लास 12th खतर यथ मज डिस्कस करो Coulomb's लॉ। Coulomb's लॉ दिवान जनरली यूज गसान टू कैलकुलेट फोर्स या हेको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। बट जनरली वनकस एक्सप्रेशन Coulomb's लॉ खतर डिराइव करो या डिस्कस करो सो एक्सप्रेशन गछि यूज पॉइंट चार्ज खतर। पॉइंट चार्ज कुस चार्ज गो कत वनो पॉइंट चार्ज। दोस्तों पॉइंट चार्ज मीन्स दैट इज अगर डिस्कस करो दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयन्स यमन वनो पॉइंट चार्जेस। अगर मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज कम से कम चार्ज दैट इज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, थोड़ा बहुत अलावा गमत आयन्स यमन वनो पॉइंट चार्जेस, यमन ते वनो पॉइंट चार्जेस। ब्याक डेफिनेशन या ब्याक किस्म इस पॉइंट चार्जिंग सह कुस किस्म ये वन चार्जेस। अगर बॉडी पे वो चार्ज कुछ बॉडी पे वो चार्ज अगर वो जनरली वो इफ this distance between charges is large as compared to their size। अगर distance between charges आसे वारिया ज्यादा यथ मज चार्ज यूज वो वनो यह पॉइंट चार्ज एज लाइक इलेक्ट्रॉन, यह चार्ज एज लाइक प्रोटॉन या यह सह चार्ज इस आयनस पे आयनजन पे बल्कि यह चार्ज यथनस आसान बॉडीजन पे एक्सटेंडेड बॉडीज अगर तो 11th मज पोर्मुत। बट अगर डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज वेरी लार्ज, इफ द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज इज अगर बॉडियन दरमियान जिमन बॉडियन पे चार्ज तिमन इज डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन तिम यीत्या दूर जे यहद साइज यह वारिया कम एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अम साथ हेको पॉइंट चार्जेस हेको कंसिडर पॉइंट चार्जेस कर। फॉर एग्जांपल अगर बह दप अगर अर्थ तो सन निमो, अर्थ सन, अर्थ सन एग्जांपल दिमा अर्थ सन अगर वो डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इट इज वेरी लार्ज, यह ज्यादा एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ सन। अतन कंसिडर करान सन और अर्थ एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स क्या दोन दरमियान लार्ज डिस्टेंस। इथे कन वो अगर अस निश बॉडीज तिमन पे चार्ज मगर यम बॉडीज दूर एज कंपेयर टू देयर साइज तिमन हेको पॉइंट चार्जेस वन, तिमन हेको वन पॉइंट चार्जेस। तो बुकन मज जनरली वुचमुत तिमो लिखमुत जनरली Coulomb's लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, फॉर पॉइंट चार्जेस। बट यह स्टेटमेंट सही कह वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, यह पॉइंट चार्जन खुद वैलिड कह बल्कि डिफरेंट एक्सप्रेशन यूज गस वनकन एक्सप्रेशन करो डिराइव यह एक्सप्रेशन तुम बूजम एक्सप्रेशन एफ इज के Q1 Q2 by R स्क्वायर, यह एक्सप्रेशन ओबियसली पॉइंट चार्जन खुद। अमुक मतलब गो हेको बदलन कुछ चार्जन पे अप्लाई कर Coulomb's लॉ ना इस कथ कह हेको प्रेथ कुछ जाए Coulomb's लॉ यूज कर क्लियर। मगर एक्सप्रेशन सह थोड़ा बहुत डिफरेंट ब्रोह कन करो डिस्कस। बट ये वनकस सिंपली वन
tim bodies yiman hun size variya kam as compared to their distance of separation. Timan khatra asi discuss karun Coulomb's law. Clear? Dayim cheez yus tayat mazan yaad chu thaun yus amik statement chu statement as maz देखो इतने statement तम पत वन बतात मजन क्या point ता याद थो अमिक statement युस छु Coulomb's law statement. Let us suppose asni छु z charges q1 and q2 z charges छु asni छु ak छु q1 byak छु q2 yim छु at a distance of r from each other and r either q1 and q2 are electron and a proton or electrons or these elementary particles, or q1 and q2 are large bodies but the size yus human size chu variya kam as compared to this r. You ch thon atmazan yaad wo kya shat mazan statement yus is Coulomb Charles Coulomb mandit clear su chu wanan is the magnitude of force worth magnitude of force magnitude of force magnitude of as one item force is not mutual force between any 2-point charges is first directly proportional to the magnitudes directly proportional to the magnitudes of the charges that is F is directly proportional to Q1, Q2. Which is दोस्तों? Now magnitudes of mutual force. ये तो magnitude करा calculate force. खाली magnitude. Direction इस काट चलने से तो करा फिलहाल किहिंद. क्या चाहसान सो is directly proportional. सुकत proportional चाहसान magnitude of the charges. Directly proportional to product of the magnitudes of charges. In ki man doni product chu asan su tamuk magnitude chu product magnitude chu that is directly proportionality chu. Second, inversely proportional to square of distance between them. That is, F is inversely proportional to R square. Kya iski mesh goda yolmut iman don darmiyan yos distance chu so R. Byak ek cheez chu idan thon yaad yos distance chu asan R distance. Generally chu iswana chu asan center to center distance. But ekis pointus chine center define karan. Ekis pointus khatre gesni center define kind. Clear? This is general distance from Q1 Q2. Center to center. Agar is bono center pe chi distance. Amik matlab ko center pe endas tam chi distance. At pointus to radius. Agar is radius banyo. Ye banyo na tel point. Ye cheezas radius banyo so banyo circle. Ya sphere. Ye banyo point pat kind. War thondan. You should vary a lot. Achuna generally radius. Hako is 0 to shot. So inversely proportional to square of the distance between them. That is this. 3 point important point from yaad. You also need discuss karna iske balki you should generally vectors must discuss karna. But itin chu zururi thon yaad kaise ki samjhaw bet point aspect. Beiti itna sasi point zurat. Like is beiti itna zurat. Ye kya chu? That is directing
along the line joining the point charges. Joining the point charges. Directing along the line, joining the point charges. This one is one. Yes, line yet man Q1, Q2, but is a straight line. You force upari directing means upari existing experience gasan. Clear? Yem satan isi combine karo. First to the second. As kya mele thanas? F is directly proportional to Q1, Q2 divided by R square. F is directly proportional to Q1, Q2 by R square. Or we can write F is equal to some constant K Q1, Q2 divided by R square. K is constant. क्योंकि इतना directly proportionality या proportionality sinus इसलिए कि constant आप सितन add. Constant is you constant I think constantus क्या चीज now दिवान that is Coulomb's constant. Where F is equal to K Q1 Q2 divided by R square. Where K is equal to Coulomb's constant. या वनो इसे electrostatic constant. Electrostatic constant. It can is gravitational last much gravitational constant bananas. Is that as G capital G. Actually, gravitational constant. You can see bananas electrostatic constant. Yachat bananas generally electric force constant. Back cheese out on it. You see F itness, actually petkin sign dun arrow chanatrawn petkin. Sign logo arrow chanatrawn petkin. Yeah, question is still scalar form. Should vector form as much as magnitude is cut karan. But in direction is cut karan. Clear? So F is K Q1 Q2 by R square, where K is Coulomb's constant, electrostatic constant, and electric force constant. You see K. K. It is I'm brought ये बन अत कोता value SI systems मस K depend करान दोन चीजन पे K इस value निवान generally 9 into 10 to the power 9, that is SI system value. Plus, the cheese vacuum as much as value. We should don't cheese and depend karan. First, ago system of unit employed. Yes, mazan ku system of unit go employ. Second, that is nature of medium. Nature of medium. Use a case value that is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. This value. This value in vacuum. In vacuum or air. Vacuum as medium, yes, air medium. That must be the 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. Yemek unit kaitav, yem unit Newton R square, that is meter square Q1 Q2 gets divided if I even Coulomb minus 2. क्योंकि when में charges क्या unit, so करो इस unit
Coulomb's law path discuss. Yeah, eighth month gets to discuss. K is 9 into 10 to the power 9 Newton meter square Coulomb minus 2. ये कथ मज वैक्यूम या एयर प्लस मज यूज गोमुत SI सिस्टम कुछ सिस्टम SI सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यथ मज बुक जनरली यथ मज हायर बुक सो इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी तथ मज ब्रोट SI सिस्टम ब्रोट गॉसियन सिस्टम तक बुझमुत गॉसियन सिस्टम अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट गॉसियन सिस्टम मज केस वैल्यू 1 केस वैल्यू या लॉरेंटिस सिस्टम लॉरेंटिस सिस्टम मज वैल्यू 1/4 पाई SI सिस्टम यथ मज वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्लियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह कमिक वैल्यू के तो यह सॉल्व कर 9 into 10 to the power 9 Newton meter square and Coulomb minus 2 यह मज ब्याक चीज that is nature of the medium यह चीज nature of the medium तो nature of the medium inverse proportionality यूत ज्यादा तूत k वैल्यू कम यूत कम बट तुम पाई एप्सिलॉन नॉट इज जनरली यूज्ड फॉर यह कमिस खतर यूज गसान वैक्यूमस खतर तो अमिक वैल्यू दैट इज 8.85 into 10 to the power minus 12 केस यम यूनिट्स तिमाई मगर इनवर्सस मज क्या अगर बह एप्सिलॉन नॉट अमिस केस निश खान के वस बोन क्लियर पत केस यूनिट्स 4 पाई 1/4 पाई यूनिटलेस के यूनिट खसन हेर मीन्स यम गसन रेसिप्रोकल मीन्स न्यूटन -1 मीटर -2 Coulomb power 2 ये मीन यूनिट्स कमिस चीजस यूनिट्स दैट इज एप्सिलॉन नॉटस तो यह सारी खुद मिनिमम वैल्यू एप्सिलॉन नॉट मीन्स परमिटिविटी वन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यह करो अलग लेक्चरस मज फुल डिस्कस ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम गो क्या क्लियर सो एफ अगर इन जनरल रिप्रेजेंटेशन दिमो कमिस खतर Coulomb's लॉस खतर दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स खतर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्या बने F equals 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square ये पे में ब्याक चीज याद इसमें वन तुन वार ध्यान दिन इतनस मैं वन दैट यस आर डिस्टेंस which is a कथ याद इतनस अख कथ के याद थवन दैट इज युस F इतनस यह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या चीज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स Q1 Q2 it is magnitude of charges Q1 Q2 at mans kya magnitude of charges magnitude means agar as nishan ka minus Q1 amount of charge जैसे Q amount of charge ऐसे ये positive न्यून that is Q number positive sign इसलिए क्या बुक से modulus function use करान इनके modulus त्रावन that is ये बना positive clear second thing is most important thing सो क्या ये से इतना से R is distance between charges distance between charges what hunda Q1 Q2 point charges Q1 Q2 point charges मैं वन point charges निशन z types आगो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आयनस तिम चीज या वनो पॉइंट मतलब गो रेडियस यथ 0 रेडियस आस यह which tends to 0 वारिया small radius so r is the distance between charges तो पाने assume कर रेडियस
औसत यूत अत गस आसन रेडियस क्या पत सहन त ऐड करन ना सो छन ऐड करने जरूरत कहीं थी सेकंड पॉइंट इस याद होनी थनस इस में उतन ताम थी दैट अगर डिस्टेंस आसी वारिया ज्यादा एज कंपेयर्ड टू साइज एज कंपेयर्ड टू साइज तम साथ इस आर छु यह सेंटर टू सेंटर तेल न्यू क्लियर डिस्टेंस ज्यादा बट रेडियस आस तम साथ यम साथ ऑब्जेक्टन पे चार्ज ऑब्जेक्टस आस कह रेडियस तम साथ सेंटर पे सेंटर डिस्टेंस नी लेट अस सपोज अस नी ऑब्जेक्टस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ए ब्याक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बी यह जरूरी वो हमेशा स्फेरिकल शेप समझाने खतर वो दिम एग्जांपल ठीक है वार थी ध्यान यथ पे सिमेट्री चार्जेस सिमेट्री मीन्स क्या गो प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस मज इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस मज इक्वल योर ति सोई कंडीशन प्रेथ कुन वॉल्यूम एलिमेंटस अस निशन बने जो ऑब्जेक्ट यम मे निश जो ऑब्जेक्ट क्लियर यमन डिस्टेंस वारिया ज्यादा एज कंपेयर टू देयर साइज यथ वीडियोस मज हेक बह हाथ कह बट फिलहाल करियो एज्यूम जी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन वारिया ज्यादा क्लियर अम पे यमस ऑब्जेक्टस निश इस ऑब्जेक्ट ये यथ ऑब्जेक्टस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ इक्वल यूता चार्ज अकिस सेंटीमीटरस ये तूत अमाउंट ऑफ चार्ज अकिस सेंटीमीटरस ये तूत अमाउंट ऑफ चार्ज अकिस सेंटीमीटरस ये तूत अमाउंट ऑफ चार्ज सेम कंडीशन यथ खतर तह प्रेथ कुन यूनिट लेंथ पे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज तम साथ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बॉडीज दैट इज फ्रॉम सेंटर टू सेंटर क्या चार्जुक सेंटर यम किस ज्योमेट्रिकल सेंटरस पे चार्जुक सेंटर यम किस ज्योमेट्रिकल सेंटरस पे बट अगर वन चार्ज सिमेट्रिक कहीं लेट अस सपोज यह सेंटर यम साइड चार्ज कम यम साइड चार्ज ज्यादा तुम वुचान यम साइड चार्ज ज्यादा यम साइड चार्ज कम बाय एनी प्रोसेस यम साथ ब्रोट कन पर कुछ बॉडी चार्ज दिमो यह सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन मज गसान एडजस्ट बे हवान सिमेट्री मज फिलहाल अगर ना सो कंडीशन तेल क्या कर तेल यह डिस्टेंस आर डिस्टेंस गि डिफाइन बल्कि गि आर डिस्टेंस थोड़ा बहुत गुन क्या ये चार्जुक सेंटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या हेको सेंटर ऑफ मास ऑफ द चार्ज क्या बॉडी सेंटर वुचन क्या बल्कि वुचन चार्जुक सेंटर सह पॉइंट नुन यथ पॉइंटस पे बास सोरे चार्ज कंसंट्रेट गुमत क्लियर सो डिस्टेंस कंसिडर कर डिस्टेंस दैट इज आर क्लियर यह पॉइंट इतनस इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या यह पॉइंट जनरली समझ कहें बे थवन याद सो एफ इज के Q1 Q2 by r square or f is 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square. Q1 Q2 it is the magnitude of charges. Magnitude of charges. And what is r square? It is the distance. Yes, we want to equals distance. Clear? The basic point is shet Coulomb's last bit. Tim karo is base lecture discuss. Not when you board lecture.